गुड गुड So I think I am 25 jai question कर देथिले. So let's do from question number 26. Okay, question number 26. Which one of the following item are listed under concurrent list of Indian Constitution? The code amar concurrent list achi. Insurance, relief of the disabled and unemployed, electricity, taxes on the sale of electricity, bankruptcy, marriage and divorce. Okay, तो कौन हवा हमारा आंसर? देखो हमारा ये जो कोड़ा स्टेट लिस्ट है, कोड़ा यूनियन लिस्ट, कोड़ा कॉन्करेंट लिस्ट एटा कितना नंबर शेड्यूल रे अछि? शेड्यूल 7 रे अछि. यूनियन लिस्ट रे केतरा सब्जेक्ट अछि? चेंज हे केबे 100 अछि. हमरा 61 होछि कॉन्करेंट लिस्ट रे, स्टेट लिस्ट रे 47 टा अछि. ओके, तो हमरा यूनियन लिस्ट रे कोन जो गुडा कोबरे हमरा यूनियन लॉ करियो. फॉर एग्जांपल हमें कहबा ये जो एटॉमिक एनर्जी हमर रहला, रेलवे हला, पोस्ट ऑफिस हला, तो एडा का हमर यूनियन लिस्ट करि परिबो. स्टेट लिस्ट रे हमर कोडा रहला, पंचायत राज हला, लॉ एंड ऑर्डर रहला, तो एगुडा को रहला. तो जोडा को जो स्टेट लॉ करिबो एंड जोडा को बोथ लॉ करि परिबे सेटा हमें कोन को कॉन्करेंट लिस्ट होछि. तो इंश्योरेंस ता हमर कहार सेंटर. ओके, इलेक्ट्रिसिटी देखा होछि हमर कोन ना जो कॉन्करेंट लिस्ट रे. मैरिज जो हमारा बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट रे. सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी रा डिस्ट्रीब्यूशन के करूछि स्टेट हमर जेमति कि ओडिसा रे हमर टाटा पावर करूछि. ओके, तो एटा हमर देखिबा. तो आंसर हबो 356 ओनली. तो आर कोन डिटेल एक्सप्लेनेशन जदि देखिबो जे हमरा 7 शेड्यूल जोडा रहउछि. 7 शेड्यूल टा हमर रिलेटेड टू distribution of the power between center और state. आउ हमर कोडा कॉन्करेंट लिस्ट रहबो तीनटा. यूनियन लिस्ट जोडा हमर यूनियन लॉ करि परिबो आप रे हमर 100 सब्जेक्ट अछि. ओके, सो स्टेट लिस्ट रे हमर 61 टा अछि जो थे स्टेट लेजिस्लेचर करबा. आ कॉन्करेंट लिस्ट जोडा हमर कोन कहउछि 47 टा हमर कॉन्करेंट लिस्ट हमर अछि. ओके, तो आगुरु हमर स्टेट लिस्ट रु हमर हटे की
हमर कोन हला ना कनकरेंट लिस्ट रे हमर ऐड कर देथिले ओके तो एथिरे हम कोन देखिबो जे हमर को गुडा हमर रहउची प्रथमे होउची कोन ना कनकरेंट लिस्ट रे हमर जो रहिला तमरो इंश्योरेंस ता रहिबो हमर कोन इंश्योरेंस हमर यूनियन लिस्ट रे आसीबो इंश्योरेंस ता कोथिरे यूनियन लिस्ट रे रहिला रिलीफ ऑफ डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टैक्सेस एटा रहिबो कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटा हमर रहिबो स्टेट लिस्ट रे ओके यदि टा रहला पंचायत राज परीक्षा रे पड़ितला पंचायत राज ता कहा अंडर रे आसी एटा हमर स्टेट लिस्ट रे आसी ओके सो इलेक्ट्रिसिटी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी मैरिज एंड डिवोर्स एटा हमर आसुची कनकरेंट लिस्ट रे माने एई जो पेज ता हमर रहउची कोडा स्टेट लिस्ट रे कोडा कनकरेंट लिस्ट रे कोडा हमर जो यूनियन लिस्ट रे हमें गोटे निहाती पढ़िया दरकार प्रति वर्ष दीटा क्वेश्चन आ एवरी ईयर मैंडेटरी तमे जदी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिवो तो डेफिनेटली आ भितर गोटे क्वेश्चन पड़ आउ से माने एमिति कष्टिया क्वेश्चन पचार दिबे जोडा कि तमे सुनी नथिबो एटा काहा अंडर कंफ्यूजन हेजबो सेति पई मझिरे मझिरे थरे से लिस्ट टाकू गोटे थर तमे पढ़ी दियो ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 27 यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड दिस इज इन न्यूज़ राइट नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमरो लॉ कमिशन को दिया जाय से माने एग्जामिन करछनी फाइनल रिकमेंडेशन देला पारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन भाबिबो सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इट एम्स टू फॉर्मुलेट द कॉमन पर्सनल लॉज गवर्निंग डायरेक्ट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज after the term uniform civil code is not mentioned in the Indian constitution Goa is the only state to have UCC तो कौन हमारा करेक्ट आंसर ना करेक्ट आंसर है 1 and 3 होई जिवो हमारा उत्तराखंड भी हमारा ट्राई करूची रिसेंटली तो हमारा उत्तराखंड रे एटा ऑलरेडी पास हैला ना हबो हे गलानी ओके तो जदी उत्तराखंड हे गलानी देन तमरो ए स्टेटमेंट रॉन्ग है ओके कारण गोवा थिला एटा हमर प्रोसेस चली थिला उत्तराखंड रे किंतु उत्तराखंड जदी वर्तमान ऑलरेडी एटा पास करी थिबो देन उत्तराखंड गोवा न गोवा एंड उत्तराखंड दीटा काम रे हेजो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर केत नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रा एटा कोउथिरे आसुची गांधीयन रे आसुची ना लिबरल इंटेलेक्चुअल रे आसुची ना सोशल तो लिबरल इंटेलेक्चुअल रे आसीबो यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा हमर तीन थरा पढिलानी ओपीएससी प्रीलिम रे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 रे हमर अछि जोडा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रा लिबरल इंटेलेक्चुअल आसुची तो एटा कोन पई ना वेदर डिफरेंट को भी रिलीजन हो हिंदू हुअंतु कि मुसलमान हुअंतु तो तांकर मैरिज डिवोर्स आउ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस रे ओडे यूनिफॉर्म लॉ रहबा दरकार हिंदू मानको पई जा मुसलमान मानको पई ताहा तो फॉर्मुलेट ए कॉमन पर्सनल लॉ गवर्निंग द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी तो हिंदू हुअंतु कि मुसलमान हुअंतु से मानकर मैरिज डिवोर्स आउ इनहेरिटेंस रे कॉमन लॉ रहिबो जेमति कि हमें कहले ट्रिपल तलाक रे से मानकर जदी 3 टाइम्स हमर तलाक कहि दुछन हमर डिवोर्स हे जाउची तो तांकर डिफरेंट हिंदू रे तमे जणु को मैरिज करछ विदाउट तांको डिवोर्स न देला जाय सेटलमेंट न हला जाय यू कैन नॉट मैरी ए सेकंड गर्ल तो एठी हमर हिंदू मुसलमान पई डिफरेंट लॉ तो हमर हमें यार माने एम होची जे कॉमन हमर लॉ रहिबो बोथ तो मुसलमान पई द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो हमर आर्टिकल 44 रे यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा लेखा देछि डीपीएससी रे गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट जेतले हमें क्वेश्चन करिथिलु सेतले गोवा थिला मे भी जदी सेटा प्रोसेस रे थिला हमर उत्तराखंड जदी एबे उत्तराखंड ऑलरेडी अप्रूव करि देछि देन उत्तराखंड आल्सो तमे इंक्लूड करि परिबो ओके तो गोवा एंड उत्तराखंड ओके तो आंसर हिजबो कोन ना तमरो 1 and 3 हिजबो करेक्ट आंसर ओके सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 रे ऑलरेडी एटा मेंशन अछि ऑलरेडी अप्लाइड हेज तो अप्रूवल दे देछन तो ग्रेट तो एटा तमरो उत्तराखंड सो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर यूनिफॉर्म सिविल कोड कथा को जाउछि गोवा इज द ओनली स्टेट किंतु गोवा परे हमर कोन होछि ना तमे कहि परिबो उत्तराखंड also made the first time recently तांकर ओटे कमिटी बसला एंड एटा हमर ऑलरेडी हमें कहू जे अप्रूव हे जाय छै
नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट तमरा ओपीएससी रे पडितला 103rd अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू व्हाट ओके ईडब्ल्यूएस को लेकी तो हमें क्वेश्चन ताको टिके डिफरेंट मॉडिफाई करके करिसे द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 which provide 10% reservation economically weaker section EWS हमर 2022 रे क्वेश्चन हमर PSC प्रीलिम रे थिला which one of the following provision to the constitution of India is correct ओके तो एडा हमर जो EWS ता कोठी अप्लाइड हे परिबो तो हमर जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें कहले हायर एजुकेशन रे हमर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाउची एटा तमे EWS को तो 15 रे अछि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे भी हमरा EWS को जेमति यूपीएससी रे तमे देखिबो EWS कोटा अछि 10% तो 15 और 16 रे 21 ता तो हमर राइट टू एजुकेशन जोटा कि हमर केबे ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आसीना ओके तो राइट टू एजुकेशन जोठी 6 रु 14 वर्ष पिला को हमरा फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन दिया जाउछि ओके फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन दिया जाउछि जोटा कि आगुरु एटा हमर कोठी थिला 45 आर्टिकल नंबर 45 डीपीएसपी रे थिला जोटा कि हमर हटेई के आनी कि फंडामेंटल राइट रो ओके आर्टिकल नंबर 21 ए रे रखा होला 86 अमेंडमेंट एक्ट राउ 45 रे हमर कोन रखा हो 0 to 6 इयर्स पिला को यारली चाइल्डहुड केयर हमर प्रोवाइड करा जिवो तो एटा हमर रॉन्ग अछि ओके तो एटा नॉट रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस आर्टिकल 46 इकोनॉमी हमरा वीकर सेक्शन मानकर एजुकेशन आ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पय हम ट्राई करियो ओके तो आंसर हमर कोन हे जिवो ताहले ना हमर 1 and 2 ओनली हे जिवो ओके तो हमें कहले जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मन रखिबो इट्स रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस हमरा सिविल सर्विस पोस्ट हो किमा गवर्नमेंट रे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने तुमको रिजर्वेशन दिया होची आर्टिकल 14 और 16 15 और 16 रे हमरा ए प्रोविजन ओडा को अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 consider the following statement with reference to overseas citizen of India okay OCI card holder okay OCI card holder are granted dual citizenship based on recommendation of LM Singhvi committee both OCI card holder and NRI Indian have the right to vote in India Pakistan and Bangladesh national are not eligible for OCI status कोटा करेक्ट हमरा OCI और PIO भितर डिफरेंस कोन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन NRI तमे जानि छ कोन नॉन रेसिडेंट इंडियंस काहा को तमे NRI कहबो केते दिन से जदी इंडिया बाहर रहबे तमे लगो रहे 6 मंथ ओके केते मंथ 180 days or 6 months ओके ओके सो एक्चुअली आगुरु थिला तमरो 180 डेज जदी तमे बाहर रहूछ देन तमे सेहिथिरे एनआरआई रे तमे आसीबो ओके तमरो 6 मंथ जदी एबव रहूछ एनआरआई रे आसीबो तो एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस ओसीआई माने कोन तमे हमरो जो माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में तो से माने को ए जो हमर एलवेन सिंघवी कमिटी हमर एटा होची पीआईओ को हमर को होची दिया जाय छी ओके एथिरे देखियो कोन कोन इंपोर्टेंट फास्ट होची एटा हमर काहे कि न्यूज रे थिला 2015 रे ओटे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2015 रे आसे तो रिप्लेस द नोमेनक्लेचर ऑफ ओसीआई को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को चेंज करके ताको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बोली हम ताको चेंज कराबा ओके तो जो एलएम सिंघवी कमिटी हमर कहितला तो एथिरे कोन कहितला जे ओसीआई न एमाने काहा को डुअल सिटीजन ओसीआई इज नॉट एक्चुअली डुअल सिटीजन आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काहा को डुअल सिटीजनशिप दिया जाय यदि देखिबो हमर सिंगल सिटीजनशिप ओके सिंगल सिटीजनशिप आउ जदी भी तमरा डुअल सिटीजनशिप रहियो माने तमरा गोटे तो कटि जिवो ऑटोमेटिक तेनु इंडिया रे डुअल सिटीजनशिप रा कथा हमरा
आसुनी सो LM Singhvi committee recommended the amendment to the Citizen Act 1995 to provide grant for dual citizen काहा को dual citizenship दबा कथा ये कहथिले PIO person of Indian origin person of Indian origin माने किया किए माने जहार जे आइदर इंडियन ओरिजिन नो हेतिबे त हमें केबे कमला हरिस ओके और तमे कहबो जे ऋषि सनक तो माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो माने कि इंडिया रु माने तांकर फादर मदर ए माने इंडिया रु बिलोंग करूछंती तो इंडियन ओरिजिन रो जो माने हेतिबे तो से माने तो सेठिकार सिटीजन एठिकार भी तांकू सिटीजन दबा पई ये रिकमेंडेशन करथिले नॉट ओसीआई तो ये कहा पई कहिथिले जे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रो तो एटा गोटे कथा हमर इंडिया रे तो डुअल सिटीजनशिप नाही उस हमर जो ए जो थर्ड स्टेटमेंट थिला जे पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनल आर नॉट एलिजिबल फॉर ओसीआई स्टेटस यस तो पाकिस्तान आउ हमर बांग्लादेश रु जो तांकर फादर होंतु मदर होंतु ग्रैंडफादर होंतु जे भी तो सेमानन को केबे हमर डुअल सिटीजनशिप दिया जिवो नाही ओके not eligible for OCI जो overseas citizen of India status ताको दिया जिवो नाही both OCI card holder and non resident have the right to vote in India okay NRI माने देई परिबे सपोज मु कोन कली मु ओ पाखरे इंडिया रे सिटीजनशिप अछि मु एबे यूएस जाई छि गोटे प्रोजेक्ट रे काम करिया पई 6 मास कि वर्षे रहला त मु आसी कि देई परिबे ओके किंतु OCI माने देई परिबे नाही OCI जो माने ओवरसीज जो कार्ड होल्डर ऑफ इंडियन जोड़े रहउछंती से माने कोन ना केते थरो इंडिया को बुलिया को आसी परिबे इंडिया को विजिट करि परिबे इंडिया रे आसी कि मल्टीपल टाइम विजिट करि परिबे किंतु इंडिया रे वोट देई परिबे नाही तो एडा तमे मने रखिबो तांका भीतर डिफरेंस कोन हमर रहउची एडा तमे पढिबो OCI card holder are eligible for multiple entry lifelong visa से मानकु for visiting India for any other purpose by तमे जेते थरा इंडिया को आसी परिबो लाइफ टाइम वीजा कथा कहउची दे आर ट्रीटेड पार्ट पैरिटी विथ द NRI जो है फैसिलिटीज अछि आंकु भी OCI माने को भी सिमिलर फैसिलिटीज दिया जाउची बट गोटे प्रॉब्लम हला कोन ना एइथिरे सेमानन को कोन करा जिवो ना वोटिंग राइट दिया जिवो नै जोटा कि NRI माने को वोटिंग राइट दिया जाइछि ओके एंड ए पर्सन who or either whose parents grandparents जो माने belong to Pakistan Bangladesh तो सेमानन को OCI फैसिलिटीज नै ओके तो एटा तमे मने रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 English and Hindi are official language of the Supreme Court. Governor of the state, with prior consent of the president, may authorize the use of state official language in the High Court proceeding. कौन हबो आंसर ओनली 2 हबो ओके तो एइथिरे हमरा कोन होची ना इंग्लिश ता केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बोली हमरा कोहा हैछि सुप्रीम कोर्ट रो हम कॉन्स्टिट्यूशन ना नै ओके तो सुप्रीम कोर्ट रो हमें कहउचे तो से पचारि सुप्रीम कोर्ट रो इंग्लिश एज एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमरा इंग्लिश ता एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट विथ prior recommendation of the president may authorize the state official language in the high court proceeding तो हमर जेमति ओडिसा रे हाई कोर्ट रे जदि हमर गवर्नर विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कर नै कि ओडिया को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे इंट्रोड्यूस करि परिबे तो सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि तो एथिरे कोन ना आर्टिकल 348 कोन कहउछि ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट all the proceeding of the Supreme Court and even High Court shall be in English language until the Parliament by law otherwise proceed. तो जो पर्यंत पार्लियामेंट रे अलग किछि हमरा कोन होछि किछि हमरा डिसाइड करिनी से पर्यंत अलग लैंग्वेज हमरा इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमरा सुप्रीम कोर्ट रे अछि ओके
तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश ओनली पार्लियामेंट को जो पर्यंत अलग लैंग्वेज किसी स्पेसिफाई करेनि तापर हाई कोर्ट रो जो लैंग्वेज गुडा रहिला द प्रोसीजर हाई कोर्ट आर हेल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज तो एथिरे कहा गला जे जदि गवर्नर चाहिए हाई कोर्ट रो लैंग्वेज को अलग तांकर लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करि परिबे एज ऑफिशियल लैंग्वेज संगे किंतु प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तांकर दरकार ओके सो गवर्नर ऑफ द स्टेट मे विथ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट authorize the use of Hindi or any other official language in proceeding of the High Court. However, the judgment, decrees and order must continue to be English only until the Parliament otherwise provides. Statement 2 टा हमरो ठीक अछि, first हमरो wrong अछि. Question number कोडा हमर करेक्ट नाही पचरी ओके नॉट करेक्ट परीक्षा रे लास्ट टाइम बहुत पिला भूल करंती जे पढिथिबो नॉट करेक्ट मारी के आस्थिबे करेक्ट ओके नॉट करेक्ट एटा कोन पचरी छी फंडामेंटल ड्यूटी टा कोठु आसी छी यूएसएसआर रु आसी छी नॉट हमर इरिस कॉन्स्टिट्यूशन इरिस रु हमर कोन डीपीएसपी आसी छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा हमर पार्ट 4 रे अछि एटा हमर पार्ट केते रे अछि कितना नंबर आर्टिकल 51 ए रे अछि एटा हमर कोन ना 36 रु 51 ओके तो एटा हमर 51 ए रे अछि तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आसी हमर एटा कोठु आसी छी यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन आसी छी ओके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नथिला जो हमर फंडामेंटल ड्यूटी एटा को हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जेतेले संविधान तयारी हैला सेतेबेले तो एटा नथिला परे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमर आसिला ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कर स्वरण सिंह कमिटी रो स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 1976 रे आसीबो स्वरण सिंह कमिटी केतडा हमर रिकमेंडेशन देइथिबो स्वरण सिंह कमिटी केतडा रिकमेंडेशन देइथिबो फंडामेंटल ड्यूटी 8टा देइथिबो ओके सेथिरे राइट टू वोट भी थिबो पेइंग ऑफ टैक्स भी थिबो ओके किंतु से दीटा को से माने इंक्लूड करि नथिबे फाइनली माने 10टा नेबे आउ वर्तमान केतडा फंडामेंटल ड्यूटी अछि 11 नंबर केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट ऐड हबो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे हमर 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड करा जिवो कोन थिबो 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी the duty of the parents to send their children to the school तो स्कूल आमे कहली 6 रु 14 से पिला फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट रहला हमर डीपीएसपी रे रहला 0 to 6 इयर्स आउ एडा ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल हमर एडा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ए तीनटा को तो एडा फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो एडा को कमिटी रिकमेंडेशन है शरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन हेतला ओके सो बुझि परलो तो आंसर कोन कोडा भी ठीक नहीं 1 2 3 कोडा भी एटा हमर ठीक नहीं तो एटा हमर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन आसी छी मु जेमति कहले तुमको यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन एटा हमर आसी छी स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन दे एंड एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा गला पार्ट 4 ए रे आर्टिकल 51 ए रे हमर ऐड करा गला सो कोडा भी एथरा हमर ठीक नहीं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32 कोडा आ भीतर करेक्ट अछि देखो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक ना भूल ठीक अछि हमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन ना फंडामेंटल राइट आसी जुडिशियल रिव्यू आसी ओके प्रेसिडेंट करो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओके एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि पार्लियामेंटरी प्रिविलेज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी जे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहला
कैबिनेट सिस्टम जो कैबिनेट हमर मिनिस्ट्री रहिला तो एटा हमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अछि नॉमिनेशन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रु हमें आसी छि इरिस रु प्लस एटा भी गोटे नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू इरिस कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी आसी छि एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एटा हमर रंग अछि एटा कोड आसी छि साउथ अफ्रीका रु आसी ओके तो एटा हमर रंग आउ ई चारिटा को तमर एटा परीक्षा रे पडिथिला लास्ट टाइम यूपीएससी प्रीलिम रे क्वेश्चन तमरा कष्टिया पकेबे जो गुडा को तमे सेति पई से टेबुल टा केते गुडे टेबुल अछि यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट लक्ष्मीकांत पढ़ न पढ़ एई टेबुल को पढ़िबो कोठु को कॉन्स्टिट्यूशन आसी छि एइटा गोटे यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट रु को सब्जेक्ट गुडा इंक्लूड कराई छि सेइटा गोटे को शेड्यूल रे कोन अछि शेड्यूल 5 रे कोन 6 रे कोन 7 रे कोन सेइटा गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी रो किए चेयरमैन थिला किए हमरो जो मेंबर को माने थिले सेइटा गोटे तो एटा को मस्ट कारण एइथिरु परीक्षा रे सब वर्ष गोटे ना गोटे क्वेश्चन पडिबो ओके तो एइथिरे तीनटा अछि खास तीनटा हमर रंग अछि हमें यदि देखिबो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन आसी छि ना फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट तुमको आंसर तुमको ए पीडीएफ फॉर्मेट रे दिया जिवो आउ थरे अपलोड कर दिया जिवो क्वेश्चन ता तळको आंसर थिबो तेनु तुमको रिवीजन कला बेले इजी हबो ओके तो तुमको एइथिरे फॉर्मेट रे तुमको क्वेश्चन जेमति कि सब क्वेश्चन को तमे तो परीक्षा दउछ गोटे आप रे गोटे फॉर्मेट रे आसु जेतले फाइनली हमें आउ थरे ताकू कष्ट करी सजौ सो दैट तमे रिवीजन बेले क्वेश्चन पढिला डायरेक्टली ता तळे आंसर एतिक भी पढी दउछ जदी एथिरे पूरा सिलेबस मेजर जिंस एथिरे कवर अछि जे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस आउ पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हमें क्वेश्चन करथिले पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसी जी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेचर प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रोरोगेटिव रीड्स पार्लियामेंटरी प्रिविलेज सो पार्लियामेंटरी प्रिविलेज सो दुईटा ठीक अछि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन रो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा ठीक अछि साउथ अफ्रीका रो हमरा आसी छि कोन ना इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा सो चारिटा बनाई वेस्ट मिनिस्टर हमर जो मॉडल जो हमर जर्मनी रो फंडामेंटल राइट को जो सस्पेंड करा जाय ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी समय रे तो सेटा हमर अछि ओके इक्वालिटी ऊपर इक्वालिटी बिफोर लॉ ऊपर को स्टेटमेंट ठीक अछि माने एटा स्टेटमेंट आंसर कोन हबो ओके तमरा राइट टू इक्वालिटी हमर 14 रु 18 हमें कहले 14 नंबरटा इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ माने एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन तमे वीआईपी हो कि कॉमन लोक हो रिच हो पुअर हो एवरीवन इज सेम इन फ्रंट द आईज ऑफ द लॉ तो दैट इज काहा को हमें स्पेशल प्रिविलेज किछि दउनी समस्त को इक्वल स्टेटस हमर प्रोवाइड कराउची एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन ठीक अछि equal subjection to all ordinary law of the land administered the ordinary law of the code yes हमें जदि भूल करू तो लालू प्रसाद यादव हेले भी जेल जीवो कॉमन लालू हेले भी जेल जीवो तेनु all are equally subjected to the ordinary law of the country तापरे no person is above law केही law ऊपर केही भी नहीं ओके तो हमारा आंसर 1 2 3 आर्टिकल 14 ने हमरे कोन कहै छै इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ कांसेप्ट हमें को भाणी छै ब्रिटिश रा ओरिजिन में हमें आनी छै ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ टा हमें ब्रिटिश ओरिजिन नु आनी छै व्हाइल इक्वल प्रोटेक्शन लॉ टा हमें को आनी छै अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नु आनी छै ओके सो एइथिरा हमें कोन कहले इक्वालिटी बिफोर लॉ माने एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्सन सेकंड कथा होची all are equally subjected to the ordinary law of the country हमें रिच हुआ पुअर हुआ धनी हुआ गरीब हुआ समस्ते हमारा equally subjected to the law of the country next
recommendation of the president is required for introducing a bill to a new state. Okay, तो हमरा देखो तेलंगाना क्रिएट हैला, आंध्र प्रदेश थिला तेलंगाना, जेतेबेले गोटे न्यू स्टेट तयारी हुए किंबा ता बाउंड्री चेंजेस हुए किंबा तो एई गुडा हमें कोन गोटे अछि एबोलिश करा जाय, तो जेतेबेले क्रिएशन एबोलिशन ऑफ द न्यू स्टेट तार बाउंड्री नेम चेंज ए सब करा जाय, तो एइडा हमरा कोन हुए ना recommendation of the president दरकार। एटा केते नंबर आर्टिकल अछि, आर्टिकल नंबर 3 रे एटा मेंशन अछि। ओके, तो एटा आर्टिकल नंबर 3 रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेई की एटा पढ़ी थिला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेई की बना जाय छी। So recommendation of the president is required for introducing a bill in the to form a new state, ठीक अछि। An Indian territory can be ceded to a foreign country through ordinary legislation, एटा रहो तो हमें कोन करबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे हमरा हुए। ओके, तो एटा हमरा आर्टिकल 368 अनुसार हबो। ओके, the state can change its name anytime by passing a motion special majority in the state legislative assembly. State legislative assembly तो हम पास कले खाली ही जीवन ताकू पार्लियामेंट आउ तार कैबिनेट भी अप्रूवल एटा हमरा दरकार। तो हमरा आंसर कोन हिजबो ना आंसर ओनली वन हिजबो, गोटे हमरा ठीक अछि। सेकंड हमरा ऑर्डिनरी नो एटा हमरा जो हमरा आर्टिकल 368 अनुसार हवा दरकार। तो वर्तमान देखो आर्टिकल 3 रे कोन अछि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत थर परीक्षा रे पडुची। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू कोन करियार अछि ना सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी टू टेरिटरी फ्रॉम और एनी स्टेट, जदि क्रिएशन ऑफ दीटा नुवा स्टेट को जोड़ी की गोटे नुवा स्टेट होउची किंबा गोटे अच्छी स्टेट ता भितर हमर नुवा स्टेट बाहर के आसला, जेमति कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वास, जेमति झारखंड बिहार वासी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वासी, सिमिलरली लाटेस्ट जेमति तेलंगाना हमर आंध्र प्रदेश वासी। सो जदि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हला, increase the area of a state hella, diminishing the area of the state, alter the boundary of the state hella, alter the name of the state, ए सब गुडा अछि ना आर्टिकल नंबर 3 रे हमरो अछि। So article 3 lay down a bill contemplating the above changes, तो एडा हमरा पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस हबो, किंतु कंडीशन होछि कोन ना prior recommendation of the president required। ओके, तो recommendation of the president हमरा दरकार हबो, ठीक अछि। नाउ तमरा आउडे हमर कोन स्टेटमेंट थिला जे प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। तो जदि भी हमरा धर हमर जो रिकमेंडेशन हमें कहले एक्सप्रेसिंग स्टेट लेजिस्लेचर हमर कोन करूची ना before recommending that bill president has to refer the same to the state legislature of the concern for expressing their views। धर हमर गोटे नुवा बाउंड्री चेंजेस होची आगे स्टेट लेजिस्लेचर को हमर पठा भी जीवो एंड प्लस हमर पार्लियामेंट को हमर प्रायर रिकमेंडेशन विथ द प्रेसिडेंट रे पठा गल। सपोज स्टेट लेजिस्लेचर मानकर जो व्यू देले ता मानिया पे से बाध्य नहीं। ओके, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द आउ जो मु कहली जे गोटे टेरिटोरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ता माने कोन स्पेशल मेजॉरिटी ता हमर पास हवा दरकार। 368 रे हमर केमिति होय हमें ईच हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी रे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सेही केस रे माने को कोन करा जाय ना तमरो एडा रहिला ओडे आउडे हमर कोन ना फाइनल अथॉरिटी टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर किए करिवो सेंटर करिवो। सेंटर को स्टेट करा जो दिया जिवो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे एटा कोन हबो यूनियन कैबिनेट then decide to approve or reject the constitutional amendment since it requires amending the constitution, while both house of the parliament need to pass by a special majority। Okay, so next question number 35 with reference to public interest litigation, consider the following statement. PIL so it can be filed before Supreme Court and High Court. It is not defined in any status,
statute or any act, only the person whose rights are infringed can file a PIL in the court. Okay, तो तमरो PIL टा हमरो कोठी भी एटा कोन हे परिबो ना इंट्रोड्यूस करि परिबो सुप्रीम कोर्ट रे जेमति कि आमे कहले अंडर आर्टिकल 32 रे तमे PIL करि परिबो PIL माने कोन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डू यू नो कि PIL रो कांसेप्ट हमर केबे आसिला 1985 रे तो की आनिथिले PIL रो कांसेप्ट जस्टिस PN भगवती ओके तो जस्टिस PN भगवती को समय एडा हमर आसीतला एडा भी परीक्षा रे पडितला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक माने को एंट्री जो इंटरेस्ट रे यू कैन फाइल ए PIL तो जदि गोटे गरीब लोक से किछि करि पन ता तरफ रु तमे फाइल करि परिबे जेंति हमें कहले सबरीमाला केस रे ओमियन माननकु सपोज मंदिर भितर के एंट्री नाही तो ओमियन माननको पई गोटे एनजीओ फाइल करितला हमरा PIL तो जनरली तमर केवल जे प्रॉब्लम हेले तमे निजे फाइल करिवो PIL नै तम तरफ रु भी के PIL फाइल करि परिबो ओके तो PIL कैन फाइल हमर कोन होची बाय एनीवन इन द पब्लिक इंटरेस्ट तो सेति भाई एडा हमर आर्टिकल 32 रे तमे सुप्रीम कोर्ट को जो जाउछ अंडर आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 रे जाउछ एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रे तमे जाई परिबो एंड PIL इज नॉट डिफाइंड यस एडा हमर कोठी कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन नाही एडा हमर गोटे कांसेप्ट जोटा कि 1985 रे जस्टिस PN भगवती को समय एडा आसीबो ओके एंड only the person whose right are infringed can file a PIL no anyone can file a PIL in the public interest the public interest way anyone can file law so 1 and 2 is the correct so public interest litigation is a simple word means litigation filed in a court of law before the for the protection of the public interest so public interest litigation is not defined in any statute or in any act हमें सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 रे और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रे जाई परिबो ओके एंड तमरा होची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट डिफाइंड एनी स्टेटस और एनी एक्ट तो ऑल्दो तमरा एज रे कोन होची ना तमे भी जदि तमरा राइट्स भी वायोलेशन हेनी आउ जन कर हेची ता तरफ भी तमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमर कोन करि परिबो ना फाइल करि परिबो ओके Question number 36. 36 कौन होगा question? Answer कौन? Which of the following statement is the best defined judicial activism? Judicial activism, judicial review और judicial activism. अब इटा तुम्हारा last time पढ़ी थिला UPSC prelim रे पढ़ी थिला question को 2023 रो UPSC prelim question. तुम तो पढ़ा ही नहीं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा ही नहीं ना पढ़ा है पढ़ा है नहीं ठीक है पढ़ियो ओके जुडिशियल एक्टिविज्म माने कोन एक्टिविस्ट किए का को तुम एक्टिविस्ट करिवो जदी जणे काम न करूची तमे काहे की काम करनो बोली ता आगे जाके प्रोटेस्ट करिवो तो को केस रे सुप्रीम कोर्ट प्रोटेस्ट करिवो जदी गवर्नमेंट कोनोसी काम ठीक रे करूनी ताहाले ये कहबे जे काहे की भाई करूना प्रोटेस्ट करिवो ओके तो जुडिशियल एक्टिविज्म माने जेतेबेले जुडिशियरी गोटे एक्टिविस्ट भलिया काम करिवो जेतेबेले गवर्नमेंट को कहबो जे ई कामटा काहे कोन ठीक रे तमरा एबे सुप्रीम कोर्ट कहिछि जेमिति कि गवर्नमेंट को तमरा कोन होछि ना इलेक्टोरल बॉन्ड गुडा को जो होछि काहे कि तमे ट्रांसपेरेंसी जगु काहे कि सेटा पब्लिक स्फीयर को आनु कोन केते पैसा आसुछि कोठो आसुछि को कंपनी तुमको दउछि पर गवर्नमेंट ताको केते फेवर देखैछि ट्रांसपेरेंसी रहइबा दरकार लोक माने जानिबा दरकार तापर वोट से अनुसार देबे तो एई भलिया जेमति कहबा विशाखा गाइडलाइन गोटे हमरा अना जाइथिला जेतेबेले हमें कहले सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस वुमेन माननको सेक्सुअल हरासमेंट केस रे तो गवर्नमेंट ता पय किछ रूल्स रेगुलेशन रखि नथला सेति पय विशाखा गाइडलाइन ये ता तरफ रु अना गला तो जुडिशियल एक्टिविज्म जेतेबेले हमरो गवर्नमेंट किछ काम करूनी तो गवर्नमेंट को ये कोन करूची फोर्स करूची व्हाई यू आर नॉट डूइंग द वर्क तो एथिरे कोन ना एक्टिव interpretation of the existing legislation by a judge made with a view to enhance the utility
of that legislation for social better. तो हमर डी हिजबो करेक्ट आंसर. जुडिशियल रिव्यू कोन ना जुडिशियल रिव्यू आमे कहले जते बेले गोटे लॉ टा आसुची लॉ टा तयारी करबे कैपेसिटी हो जे हमर कहार लेजिस्लेचर मानकर तो पार्लियामेंट तो लॉ तयारी करबो बट दैट लॉ हाउ मच इट इज consistent with the constitution whether it is within the constitutional boundary or not तो सेटा को से माने रिव्यू करिवे अंडर आर्टिकल 13 रे हमर रिव्यू करिवे जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम आमे कहूचे 13 रे तो सेइथे देखिबे जदी लॉ टा हमर विदिन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री भीतर नाही सेटा को नॉल एंड void हमर कर दिबे. सो जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट द प्रोएक्टिव रोल ऑफ द जुडिशियरी इन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन. जदी सुप्रीम कोर्ट कहबा जे हमर कोन ना दिल्ली रे हमर दीपावली रे बाण मारिबा बंद काहे कि ना तमरो फंडामेंटल राइट ऑफ द हमर सिटीजन और द चिल्ड्रन इज वायोलेटिंग केमिति तमे बाण मारी कि पॉल्यूशन करबा पूरा गोटे हमर पॉइजनस जो एयर पॉल्यूशन होची जोटा कि हमें इनहेल कले दे लोकंगर हेल्थ हमर हबो. राइट टू क्लीन एयर आल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल व्हिच आर्टिकल 21 तो 21 ने फंडामेंटल राइट वायोलेट होची तो गवर्नमेंट को एमाने कहले जे तमे माने गोटे जो दिया गोटे हमर नोटिफिकेशन दियो कि दिल्ली रे बाण मारिबा बंद दीपावली तो ए जो हमें कहले जुडिशियल एक्टिविज्म डोनेट द प्रोएक्टिव रोल played by the judiciary okay in protection of the right of the citizen in promote of the justice of the society. Okay, next question. कोड आइथु बेसिक स्ट्रक्चर रे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are a part of basic structure of the Indian Constitution. The code have 135 have देखो welfare state. Yes, absolute power of the parliament to amend constitution. It have a basic structure no. Yes, parliament can amend any part of the constitution but without affecting the basic structure. से कोन चाहिले फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट डिलीट करि परिबो तो जोडा बेसिक स्ट्रक्चर ताको डिलीट करि परिबो. पार्लियामेंट पखरे पावर अछि जे से कोन करि परिबो ना ऐड करि परिबो चेंजेस करि परिबो बट कैन नॉट डिलीट द बेसिक स्ट्रक्चर जोडा को डिलीट करि परिबो. तो एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन माने पूरा डिलीट करि परिबो नै एटा नै. तापरे इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस ठीक अछि. इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रीडम ऑफ डिग्निटी एंड इंडिविजुअल तो ठीक अछि. तो एजा कोडा बेसिक स्ट्रक्चर हमें देखिबा. सो अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जोडा कि हमरा केशवानंद भारती केस रे कुआ गला. यस, पार्लियामेंट पखरे पावर अछि. He can part any part of the constitution including fundamental right भी amendment हेची जोडा 86 amendment act रे गोटे नुवा हमर 21 ऐड करा जायछि किंतु जो गुडा बेसिक स्ट्रक्चर से गुडा को डिलीट करि परिबन. सो वेलफेयर स्टेट हमर रहिला जस्टिस टू फ्रीडम एंड डिग्निटी ए सब गुडा हमर बेसिक स्ट्रक्चर रे आसु. सो 1 3 4 इज 5 इज हमर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कोड हमर आर्टिकल 30 जो 18 रे अछि. A foreigner holding an official profit under the state cannot acquire any title from any foreign state without the consent of the president. The national award instituted by the government are not violative of article 18. Kuda correct अछि. Okay, तमरा भारत रत्न दिया जाउछि. हम कहबा टाइटल नहीं भारत रत्न जोड़ा दिया जाउछि whether it is violative of हमर आर्टिकल 18 नो. आमे सेटा टाइटल नो वी आर रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ वन पर्सन. धर तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गला काहे कि ना से फील्ड रे जने एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन तांकर अछि. देशर प्राइड हिसाब रे हम ताको देखुचे किंतु जहा को दिया जाउछि जो टाइटल नेशनल अवार्ड पद्म भूषण और भारत रत्न और पद्मश्री यू कैन नॉट माने पुट द टाइटल इन फ्रंट ऑफ योर नेम. जदी तुमको दिया गला तमे एन्जॉय करो खुशी हो तमे कहबनी कि आई एम भारत रत्न तेंदुलकर ता पूर्वुर ना पूर्वुर लगेबनी दुनिया जानछि तमे भारत रत्न तमे पुनी काई लगेबा जदी तमे लगेला तमर निया आइ. ओके, तेनु हमर कोन होउछि
हाँ तुमको दिया गला यू कैन नॉट तुम लिखि परिबनी कि तम ना पूर्व पद्मश्री आमर जहाँ तुम ना दे परिबो ओके कि पद्म भूषण आमर सुदर्शन साहू ओके तो तुम एमती लिखि परिबनी कारण तुमको ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कराई बट यू कैन नॉट यूज योरसेल्फ इन दैट सो आर्टिकल हमर 18 हमर कोन ना अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जोडा थिला राजा महाराज अधिराज जोडा को ब्रिटिश समय थिला Article 18 of the Indian Constitution seek to abolish the title, make for provision in that regard. It prohibits the state conferring any title except military or academic. हाँ तमें ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट मेजर एवडा को लगे परिबो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एवडा लगे परिबो तो एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिटरी कोनोसी टाइटल तमें यूज करिबो नहीं. It prohibits a citizen of India from accepting any title from any foreign state. कौन सी फॉरेन स्टेट रु भी तमे टाइटल विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो परमिशन तमे एक्सेप्ट करिवनी. ए फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का बिना परमिशन दे भी कौन सी फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जोटा कि हमर इंडिया रे होल्ड करिछि तो से भी हमर कोन टाइटल आन करिवो नाही. ओके अवार्ड भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण दीज आर हमर कोन ना टाइटल जोटा हमें देइछ ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेशल अचीवमेंट ऑफ ए पर्सन. ओके तो तेंदुलकर को हमें भारत रत्न एथि पई देइछ कि ही हैव डन ए रिमार्केबल अचीवमेंट इन हिज कैरियर जोटा कि हमर प्राइड फॉर इंडिया 100टा सेंचुरी के करिना वर्ल्ड रे के करना है तो सेथि पई it ruled that the award does not amount to titles. Therefore, they are not violative of Article 18. Okay. 39 Charter Act 1813 permitted the Christian missionary to preach their religion in India. Charter Act 1833 deprived the governor of Bombay and Madras their legislative power. Charter Act 1853 separate the legislative and executive function of the Governor General Council for the first time. कौन हम एटा अछि ना नहीं. चार्टर एक्ट 1833 हमर जो हमर कोन करा हितला ना तमे इंपोर्टेंट प्रोविजन कुआ जाइथिबा जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुआ गला काहे कि इंडिया तांकु पावर टा सेंट्रलाइज करा हे गला टोटल इंडिया पई जणे लॉ करिवो सी होछथि हमर कोन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. लॉर्ड विलियम बेंटिक इज वे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो एथिरे आगुरु बॉम्बे पई बॉम्बे रो गवर्नर लॉ करूथिले मद्रास पई मद्रास रो तो जतेबेले हमर ए चार्टर एक्ट 1833 रे हबो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हे जिवो आउ सीए होल टेरिटरी पई लॉ तयारी करा जिवो लॉ तयारी करिबो. सो पावर टा सेंट्रलाइज करा हे गला तो पावर टा डायरेक्ट गवर्नर जनरल को दिया गला. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सीए लॉ करिवे आ बॉम्बे आ मद्रास रो गवर्नर आ लॉ तयारी करिवे ना दैट हमरा ठीक अछि. 1853 रे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल फर्स्ट टाइम पे सेपरेट करा गला. यस लॉ तयारी करिया पई फर्स्ट टाइम हमर गोटे एग्जीक्यूटिव बॉडी रहिला पर जाई कि सेटा हमर पार्लियामेंट हिसाब रे हमर हेछि तो भाइस रे तांकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 जन हमर मेंबर तो हमर कोन हेटा ठीक अछि. एंड जोटा थिला 1833 रे क्रिश्चियन मिशनरी आर प्रीच देयर रिलीजन इथे अलाउ करा जे. सो तीनटा हमर ठीक अछि. ई हमरा 1813 ने आउ कोन थिला ना अबोलिशन ऑफ द ट्रेड मोनोपोली एटा भी परीक्षा रे पडिथिला. ट्रेड मोनोपोली को ईस्ट इंडिया कंपनी रो केबे अबोलिशन करा गला 1813 रे केवल दीटा जिंस इथिरे अबोलिश करा हे नथला जोटा कि ट्रेड विथ टी आउ ट्रेड विथ चाइना. चाइना आउ टी को ट्रेड करिया को छाडी की आउ अबोलिशन ऑफ द ट्रेड करा हितला किंतु कंप्लीटली अबोलिशन ऑफ माने ट्रेड विथ टी एंड चाइना केबे करा जिवो 33 रे हमर करा 1833 रे. ओके तो एटा रहला. तो आफ्टर 20 इयर्स पर हमर जतले चार्टर एक्ट 1833 आसीबो सेथिरे हमर कोन हबो पावर टा सेंट्रल करा हबो. गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हबो. लॉर्ड विलियम बेंटिक हे जिबा हमर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बॉम्बे और मद्रास को
तांकर लेजिस्लेटिव पावर हटे नहीं कि केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और तांकर भाइस तांकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल करिवे ओके आउ एथिरे कंप्लीटली हमरा एबोलिशन ऑफ द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इंक्लूडिंग ट्रेड विथ टी एंड चाइना हमरा करा जायथिबो 53 रे कोन करा जायथिबो ना 6 जन न्यू मेंबर को हमरा ऐड करा जिवो जोडी कि हमें कहूचे लेजिस्लेटिव काउंसिल करा जिवो एंड हमरा ओपन कॉम्पिटिटिव सेक्शन जो सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विस को ओपन कर दिया जिवो इंडियन माने भी सिविल सर्विस रे पार्टिसिपेट करि परिबे जोटा कि हमें कहले फास्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर हमरा प्रथम सिविल सर्वेंट हे परिबे ओके तो एटा हमरा तो तीनटा का स्टेटमेंट ठीक अछि तो हमें 40 नंबर नेक्स्ट क्लास रे करबा ओके आई थिंक सर ऑलरेडी रेस्ट तो हमें एठी एंड करबा तो काली हमें स्टार्ट करबा कंटिन्यू करबा ओके 40 नंबर क्वेश्चन हमरा गुड इवनिंग सर 5टा रु 6टा प्रति दिन मॉक टेस्ट रो डिस्कशन हो दैट टाइम इज फिक्स 5 to 6 और 6:30 एवरी डे हमरा मॉक टेस्ट जो जोड़ा हे चलिबो तारो डिस्कशन हबो ओके एंड तुमको एई भलिया जो PDF from where we get? पीडीएफ तुमको दिया जिवो बट इन ऐप तुमको डायरेक्टली दिया जिवो नॉन यू विल फॉरवर्ड इन ऑल ग्रुप तो ऐप रे रखा जिवो फॉर रीडिंग पर्पस लास्ट टाइम हमको पिला कहउतले कि नाही क्वेश्चन टा अछि तळे पूरा स्क्रॉल करिया को पडुची मते क्वेश्चन सब ऊपर गला परे क्वेश्चन डिफिकल्ट होची तो सेति पय हमें एथिरा कोन करिचु जे ईच क्वेश्चन तळे तार आंसर रखिछु सो दैट तुमको रिवीजन बेले इजी होबो ओके ठीक अछि गुड इवनिंग सर हां को सर गुड इवनिंग सर कहते कि रेकॉर्डिंग क्लास वाला देले सुविधा में वर्किंग प्रोफेशनल ना लाइव क्लास तो सब करिया भी पॉसिबल हो नहीं सुनो आउ 2 दिन 3 दिन वेट करो डायरेक्ट ऐप रे ही करा हबा ऐप रे 2 मिनिट पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हमको आउ किछ अपलोड करिया पड़िबनी किछ नहीं ओके सो वी आर लिस्टिंग जो माने ऑलरेडी अछंदी ग्रुप रे समस्त को नै कि हम ऐप रे अपलोड करी क्लास ऐप रे ही ओके Sir, app will be convenient. This is not convenient, the हाँ, present way. ठीक अछि ऐप रे ही करबा सो दैट कि सेठी ही रहयो ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर